Cuma 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 lo kudo. Ya sia. आँखों में आ गया जो पल रुमाला मस्ताना ये दिल तेरा मस्ताना Only now, recently, it's become acceptable. So until now, they have had no practice. So if you see a man cry, you'll notice that they don't know what's happening to their face for a while. Like when you see their face, it's just like 30 seconds before the waterworks begin. Have you made a man cry, ma'am? Why don't you say it like you did it this morning? You're like, yeah, I guess. What abs? You, ma'am, have you seen a man cry at least? Yeah. Have you seen कि वो 30 seconds before the water was his face just was like, oh, तुम मेरे best friend को like करती? Oh. She's like, क्या हो रहा है भैया आपके साथ? आपको छींक आ रही है और गैस हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑफिस मेरे साथ ही नहीं होता क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है. मेरे पापा ने मुझे सिखाया था बचपन में रोना कैसे होता है. एक बार मैं लाइक 7 साल की थी और मैं अपने रूम में बैठी हुई लेकिन ये भी मेरा पापा का लड़का मैं क्रिएटिव बनूंगी मैं कुछ कर रही थी समथिंग. My dad was outside watching a movie and he was like बेटा इधर आ. I said yes पापा. He's like आपको रोना सीखना है. Then he was like ये देखो मूवी and मूवी कुछ कुछ होता है चल रही थी. And this scene you know where Anjali that tiny little shit that haircut. She's reading a Tina mummy ka letter and she's going ऐसे कैसे and that fucking Malala uses that without a tragedy. I hated her so much. She's like ये कैसे what's up with this? Like how is this? And he was like you know कितना क्यों रो रही है? I was like but I hated her even as a child. I knew she was a bitch. Okay? So I was just like ये मैंने मूवी देखी हुई थी तो मुझे पता था कि अभी रो रही है बट 5 मिनट बाद रेडी हो जाएगी. पापा पापा समर वेकेशन चलोगे मेरे टीचर को छोड़ने. So I wasn't buying any of this bullshit. But my dad was really impressed. He was like ये देखो कितने क्यूटली रो रही है. And I was like but what's wrong with the way I cry पापा? बेटे थोड़ा सा अगली हो जाता है.
I don't know if you remember crying as a child. It was like a really passionate activity. Like, मेरा सारा juice निकलता था. Like if I saw my reflection like a spoon, I would go double on. Just like, it's like I was really passionate about crying as a child. My dad was just standing there like one, like a Beethoven का वो composer. I was like, बेटा थोड़ा सा frequency इसकी थोड़ी सी कम कर दो. थोड़ा bass. It's like, ऐसे क्या बस थोड़ा सा क्वाइट कर दो उसको. Like सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा, बस इसको थोड़ा क्यूट बना दो. इसमें प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा गिलहरी टाइप इमोशन डालो, जो थोड़ा सा हिचकी हिचकी good job, जाओ करो कलर करो. But that day I learned an important lesson. I was like, crying भी professionally आनी चाहिए ठीक से. फिर मुझे 20 साल बाद पता चला कि मेरे पापा बहुत ही बड़ी hypocrite है. तो उससे मेरी दादी की death हो गई finally. And like, all death is finally, okay? ऐसे नहीं होता suddenly. ऐसे वो अच्छा. शॉप बनूं मत करो, कॉमेडी शो चलो. मेरी दादी वहाँ पे लेटी हुई थी और मेरे पापा आए थे और then he saw her and he just got like really suddenly he was just so thrown off by this whole thing. He just saw her and was like, and also she wasn't even like lying down like a pretty way like a Dobby तुम्हारी आँखें आँखों में से सितारे दिख रहे हैं. That's how she was like, she's there. My dad sees her for the first time and he goes, and that's the day I realized कि मेरे पापा को बीट बॉक्सिंग भी आती है अगर वो कोशिश करे तो. क्योंकि मेरी आंटी ने बहुत अच्छा रोया था बाहर. उन्होंने जो मातम जो मनाया था उन्होंने, they were all in like a football huddle going. There was an auntie on a higher pitch going. There was someone with a percussion going. So this is a skill that you should learn. It's ऐसी नहीं बन जाती, हंसते हंसते नहीं बन जाती है. मेरी भी फ्रस्ट्रेशन इसलिए चल रही है कि एक तो ये मेरे मेरा सिंगलहुड का ताज जो मैंने पहन लिया है अब, ये मुझे पता चल गया है लोगों को. तो मैं जब डेट्स पे जाती हूँ अब मैंने नोटिस किया कि मर्द बहुत ही ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. सारे लड़कियां जस्ट लाइक, ओ आपको बनना था ना वेस्टर्न, हाँ चलो ये आ गया बिल, लेट्स गो डच. जस्ट लाइक बट अभी तो ये मेरी फेमिनिज्म इंडिपेंडेंस भैया, अभी मैंने सीखा है. Like अभी मेरी क्लास सीलिंग को तोड़ के मेरी खून आ रहा है, यहाँ से टपक रहा है सर से. This is too soon. Just give me like 5 days. It's like, let's split the bill. I can't split the bill. I don't know how to do tax returns yet, भैया. हर साल आता है मेरे पास form 16A, but what about the first 15 forms, हाँ? वो कौन भरेगा? कभी मैंने नहीं देखे. सीधे form 16 and then it's 49B. बीच के forms का क्या भैया? वो कौन भर रहा है? This is difficult. Plus, it sounds like feminism is all like, wow, you're क्या feminism मचा रही है, but it's really hard work. It just most days it just feels like you're just like jogging, just non-stop to like a goal that's not really anywhere inside. Just jogging. और मैं jogging करती भी हूँ because I'm just like ये independent girl activity होती है. इसमें मैं ponytail बना के जाऊँगी और मेरी ponytail मेरी तरह ही अपने opinions left right करती रहेगी. And every once in a while, I want to take a break from all this Beyonce, I slay. So मेरे but okay. अगर मैं तिजोरी से जेवर चोरी कर लेती जेठानी की बहू बनके, तो उसमें क्या बुराई थी? But no, I had to do feminism at some point because this is only recent. Like before, it was a bit of an option. जब ये हम मर्दों को भी सिखा रहे थे ना कि like ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठेगी. You remember there was a song in the 70s that was just like ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे. What? They loved it so much they brought it back in 2000s in that शादी hair वाली movie में जो थी ना, जिसमें उसकी चप्पल में बोल होता है. उसमें they brought it back like the same song. They were just like ना करते प्यार हाँ मैं कर गई. I was just like क्यों करे जा रही है but ये? That's because ये male writer लिख रहा है सारे lyrics. But हमने ले लिया. We're just taking it and now the boys have just learned too much of this Beyonce stuff. So I can't fight these battles anymore. It's like अब मुझे करियर बनाना ही पड़ेगा. मेरा शुगर डैडी वाला प्लान बस्ट हो चुका है. मेरे पास एक था साइड में प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगी तो क्या हुआ?
गाड़ी खरीदने से बेटर है नोज जॉब करा लो, फिर गाड़ी तो अपने आप लेकर आ जाएगा वो. It's a great plan, guys. I don't know why it's not impressed you guys. It was a great plan for a while. So what if our dining table is like a cricket pitch? You know, is that far? You know, just sitting and I'm just cutting my broccoli and he's just like signing power of attorney. अब किसके पास जाएगा question mark? I don't know what rich people do. मैंने बस इतना ही सुना है. I have no idea what they're up to these days. So I just wanted that sort of thing, but instead I'm just sitting in my 1 BHK by myself at the khidki, just looking outside of the road, going like, yeah, I'm a modern, independent woman. I don't need no man. मैं खुद ही self-sustained item हूँ मैं. You know, I'm like a bog, like a cup noodles. You know, just everything inside. Don't need nobody from outside. I folk myself. Don't need no man. Because just this is like it's a hard life. But it's worth doing because you know so far our campaigns have not really worked. Like this one time we had this thing called Free the Nipple campaign. You remember? Remember Free the Nipple campaign? You know why it didn't work? Because they heard Free the Nipple campaign. It was an obvious one. That's why they were so supportive. Like हाँ दोनों को कर दो independent. हम चाहते हैं ये independence. These things just never work, but I just really feel like I still have to work on it. The only problem is that 80% of the time I can do it. 80% of the time I'm like, yeah, support all women, I gotta do this, I did this, done 100% all the time. 20% of the time I just betray myself. I'm just like, but what about the kutiyas? अगर हम इतनी equal है तो कुछ तो कुतिया भी तो होंगी. फिर मैं अपने दिल पे पत्थर रखे होते हैं, like नहीं, all support everybody. It's just I know that there's a part of me who's just like, का क्या? Yeah, but no, guys, it's not what you think. You guys think no, I'm fully supportive of Kangana, just so you know. There is no other way to be as equal as somebody else when you're also an asshole. It's like if everybody's an asshole, if both genders can have assholes, then yeah, I mean they do. But that's how you know equality is gonna achieve. तो मैं किसी तरह कर लेती हूँ. जैसे मेरा ना मेन रेज टाइम होता है जब मैं सड़क पे स्कूटर चला रही होती हूँ, उस टाइम मैं बहुत रेज करती हूँ अपने साथ, सब पे गालियाँ मार रही होती हूँ. But then every once in a while, you know, instead of like a just like a mother joke, I'm just like, oh, mother joke is also sexist गाली ना. आप जोक भगा जा. Every once in a while, I'm raging and doing my thing, and like somebody cuts me in traffic, and it's a car, and I notice the driver is a woman. Suddenly, I'm like, bang, you go, girl. You go. तब दिल पे कितना पत्थर रखना पड़ता है मुझे. Because हमारी काफी सारी movements fail हो चुकी हैं. ये लास्ट बता रहा है. Because हमारी सारी सारे glitches में काट दूँगी edit में. Because हमारी सारी movements काफी fail हो चुकी हैं अभी तक. But I feel like we have to still keep going and do like this 100% because I don't want to be a bahu in real life. It's a fantasy, but मैं real life में अगर मैं देवर की दाल में जहर मिला दूँगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो मैंने ही मिलाया है. Plus, bahus don't get a very good time. I've noticed in fiction, reality. ये गोभी बहू का हमने कितने सालों मजाक उड़ाया. एक लैपटॉप ही तो धोया था उसने. तो क्या हुआ? वो चावल में रख के फिर सूख जाता है. If anything, you could argue she was ahead of her time. Now we're sanitizing everything, okay? But I realized I want to do this because in fiction, reality, like bahus have had a really hard life. You know, how many times have you heard, like in one Saas Bahu serial, the fight's going on, and it's always Saas, and we're like, oh, Bahu, Kulta, Bash, but Kulta mainly. लड़का कैसे नहीं पैदा कर पाए? हाँ Bahu, लड़का कैसे नहीं पैदा कर पाए? Just one time I would like to see a Bahu turn around and be like, Sasu. क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ XX क्रोमोसोम है. अपने लौंडे से पूछो ना why. Thank you so much, guys. You have been a lovely audience. तो रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई कि आज तक उभर नहीं पाया. लाइक मैं 8th में था और तो उसमें मेरा दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझे आके पान दी. कहता
देख ले। मैं कहा ठीक है। नहीं, मेरा मन भी था, ये नहीं कि चल तेले देखूंगा आज मैं, सिर्फ तेले। बहुत मन था, ज्यादा ही था। तो बचपन में घर वालों के बहुत देखता था, उनको नहीं पसंद ये सब। हाँ, मेरा देखना नहीं पसंद, खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूँ। उसमें घर पर ऐसे कौन देखता, पॉन लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के बस वो क्रॉस होता है ना, विंडो क्लोज करना वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के किताब खोल के ऐसे सेक्स देखना। अभिषेक पढ़ रहा था तो पैर से करता है वो ऐसे मजा आता है ना पॉर्न देखने में कि आप देख सेक्स रहे हो और सारा ध्यान आपके पापा के टकले पे। क्या सोचता है तुम पॉर्न देखते तो मौके की तलाश में था, मौका मिल गया। मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं कहा ये पापा वहाँ बिजी होंगे, लड़ेंगे वहाँ जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहाँ इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। तो बस फिर पापा मान गए, मैं तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के मैसेज सजा लिया अपने। मैं कहा थैंक यू गॉड, थैंक यू। तमेरु माता पिता तमें। सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तभी मेरे डैड लग गए रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है। अंदर देख ली तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी। क्योंकि आई थिंक वो भूल नहीं रियलाइज क्या हुआ, तो गुस्सा आया, अरे क्या ये, मैं कहा ये ब्लो जाओ। क्या है ये सब, विद कॉन्टेक्स्ट। बुरी बात है, काफी बुरी बात है। अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कौन देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये तो कोई ऑप्शन नहीं था, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, मैंने घटिया एक्टिंग शुरू कर दी। मैं कहा 14 साल के हैं, 40 साल के आदमी को एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे, इनको क्या ही पता है। तो मैंने सीडी निकाली, मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा, इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे। अच्छा किसने दिया, मतलब आयुष ने। आयुष को बोलो उसके पेरेंट्स से बात करने आ रहे हैं हम लोग, अभी उसके घर जाने, और तुम भी चलो, तैयार हो, चलो। मैंने आयुष को फोन किया, वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा भाई